वो क्या था एक्सप्रेशन कि हाँ मुझे मालूम था लेकिन मैं भूल गई या भूल गया. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. फिर क्या हो जाएगा, पेशेंट मरने के बाद ओह ये देना चाहिए था बट मैं भूल गई, मैं भूल गई. तो आपको बार बार रिवाइज करते रहने का है, नहीं तो हर पेशेंट के पास जाके ओह नेक्स्ट पे अच्छा ये भी गया ओह अच्छा ये तू भी ओह इसको ये देना चाहिए. इसके लिए बार बार रिवाइज करते हैं. थैंक यू. राजन भोसले ऐसे लिखा था ना उसमें. राजन भोसले भाई एनी चांस किसी को मालूम है कौन? पेपर वगैरह पढ़ते नहीं आप? मुंबई मिरर कॉलमिस्ट है, देखो. So superior intercostal. So now it is clear. स्पेस 3 to 11 मतलब क्या कि स्पेस नंबर 10 और 11 में केवल पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी नहीं है. ये दो ब्रह्मचारी बराबर है नहीं तो कोई है ही नहीं ना. थोड़े लोग ब्रह्मचारी रह जाते हैं तो उसमें से बेचारे. आज वैलेंटाइन डे के बारे में हम उनके बारे में बात करते हैं. क्लियर? एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज. हाँ रमित. उसकी नहीं होती, वो स्पेस ही एकदम छोटा सा रहता है. क्या करेगा कोलैटरल्स जब आगे कोई है नहीं, आर्टरी ऐसे ही एब्रप्टली हो जाती है, स्पेस को सप्लाई करके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके. पॉज कर. सतवान, क्या नाम तेरा? सतवान. सफवान. 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 थैंक यू. तुमने ये बराबर से पूछा नहीं बट उसका फिर मैं वही एडवांटेज लेता हूँ कि देयर इज एंटीरियर इंटरकोस्टल veins also have a similar pattern. There is internal thoracic vein, and then there are two anterior intercostal vein, upper and lower, and then there is a posterior intercostal vein. एक कोलैटरल वेन भी है. ओके, स्टोरी सेम है. हाँ, स्टोरी सेम है लेकिन अलग है. अभी अलग क्या है मैं आपको बताता हूँ. सो देयर आर एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन्स. एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन का स्टोरी सेम रहेगा. दे विल ड्रेन इनटू एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन Safwan will drain into internal thoracic vein, and in spaces 7, 8, 9 they will drain into musculophrenic vein. Posterior drain into but then there is a difference. तो फड़का लेके गया क्या भाई तू? दस्तर ने क्यों? इसके लिए वो साफ नहीं है. So now the story of the posterior intercostal veins is different on right side and different on the left side. ये राइट साइड मैं ऐसे यहाँ पे राइट साइड का ड्रॉ कर. On right side of the thorax there is a vein, and the name of that vein is azygous vein. Name of that vein is azygous vein. आपको मालूम है azygous का मतलब क्या है? azygous का मतलब है सिंगल. एक्चुअली अनपेयर्ड. सो आपको अगर आपके रिलेशनशिप स्टेटस को मेडिकल स्टाइल में अगर लिखना है
So what you should write? Azygous. Relationship status? Azygous. Okay? Because there is only one on the right side, on the left side there is no azygous. Okay? Thank you. This azygous vein drains into superior vena cava. अभी सुपीरियर वेना केवा इज ऑन द राइट साइड, तो लेफ्ट साइड के क्या होता है? अभी इसमें क्या होता है? पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स है, ये खाली मैं पोस्टीरियर के बारे में बात कर रहा हूँ। 5, 6 सब ड्रेन करते हैं उसमें स्पेस के। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऑल पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन फ्रॉम 5 to 11 they drain on the right side into, तो ये अभी आगे से आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, पोस्टीरियरली है ये जो भी है पोस्टीरियर। एंटीरियर का तो क्लियर है ना, क्लियर है ना? तुझं नाव काय? ठाकरे काय नाव काय तुझं? हा, प्रथमेश गाव। एंटीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स कुठे ट्रेन होतात प्रथमेश? बस खाली तुझ्या मागे कृष्णा नाव असा मुलगा आहे का तो? कृष्णा ना, हाँ उभा राहा कृष्णा। किधर ट्रेन होते हैं एंटीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स? इंटरनल थोरैसिक वेन फ्रॉम 1 to 6, 7 to 9 में मस्कुलोफाइबर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्टीरियर, तो राइट साइड में पोस्टीरियर 5 to 11 दे ड्रेन इनटू azygous. Azygous, I say. Azygous पीछे है, that's what I'm talking. Azygous पीछे की साइड। Now 2, 3 and 4 they unite to form a vein called as superior intercostal vein. Abra Ali. Superior ऊपर सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी के बारे में हमने 5 मिनट पहले डिस्कस किया था। वो किसकी ब्रांच थी? हाँ, superior intercostal artery was a branch of costocervical trunk, which is a branch of subclavian. Now we are talking about superior, वो बोली पता हूँ ना, तुम लोग क्या कर रहे हैं? Superior intercostal vein is a branch, it is formed from posterior intercostal veins 2, 3 and 4, and they also drain into azygous. फिर काय को किया ये नाटक? बट किया, हाँ नहीं हाँ, बिकॉज राइट साइड पे कुछ, लेफ्ट साइड पे कुछ अलग है। दिस सुपीरियर वेना केवा इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ 2 brachiocephalic trunks. 2 brachiocephalic trunks. Brachiocephalic veins, sorry, trunks नहीं, brachiocephalic veins. And the first posterior intercostal artery drains into directly into brachiocephalic vein. Okay, directly into brachiocephalic vein. The first on the left side, ये left side है, ये right side है। First on the left side, first posterior intercostal vein on the left side also drains into brachiocephalic. The second, third and fourth vein, they unite to form second, third and fourth vein, posterior intercostal vein unite to form superior intercostal vein, which on the left side drains into brachiocephalic, because उधर azygous है ही नहीं ना, azygous है। Now 9, 10, 11 they unite. 9, 10, 11 they unite and they form
on the left side hemiazygous vein. क्या नाम है उसका? hemiazygous. Hemi means आधा. आधा. जिसका रिलेशनशिप स्टेटस थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब है कि, तो आप वो भी लिख सकते हो कि मतलब आपके मन में कुछ है, सामने वाले के मन में नहीं है, बट मेरे मन में तो है ना बाबा. तो hemiazygous. Hemiazygous. Okay. It also drains into azygous. Azygous boss है बाबा. मैंने बोला ना आपको, our country is run by azygous people. Okay. Then 5, 6, 7, 8. These posterior intercostal veins, they unite to form accessory hemiazygous. They unite to form accessory hemiazygous. Okay, which also drains into azygous. Okay, 1, 2, 3, start. so 11, 10 and 9 unite to form which vein? Hemiazygous. Hemiazygous. Hemi means half. तो मैंने आपको जैसे बोला कि रिलेशनशिप स्टेटस आपके मन में कुछ है, सामने वाले के मन का मालूम नहीं, तो यू कैन राइट हेमियाजाइगस. माय स्टेटस इज हेमिया. मैं आप सबके आज स्टेटस चेक करने वाला हूँ, क्या लिख रहे हो. अजाइगस, हेमियाजाइगस, नॉट अजाइगस. थैंक यू. नाउ दिस इज एक्सेसरी हेमियाजाइगस. म्हणजे हेमियाजायगसला मदत करणारी एखादी मुलगी की मुलगा असतो, मित्र असतो चांगला, त्याला हेमियाजायगस जाऊ देतो. जास्त डिस्कशन नको, विषयांतर होता है. आपको समझ में आया? तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट, ये नॉर्मली these vessels, these nerves, arteries, they are in the costal groove. सपोज ये रिब है, तो रिब के नीचे के बाजू costal groove होता है. So the first artery will be below the first rib, second will be below the second. तो ऐसे 12th rib के नीचे भी रहेगा, बट उसको इंटरकॉस्टल नहीं बोल सकते, बिकॉज नीचे कुछ नहीं है, तो उसको सबकॉस्टल बोलते हैं. So there is a subcostal artery, there is a subcostal vein. So azygous is rather formed by subcostal vein, ascending lumbar vein and lumbar azygous vein which connects it with inferior vena cava. ये अजाइगस जो बनाया है ना भगवान ने, उसको ऊपर सुपीरियर वेना केवा से कनेक्टेड है, एंड नीचे वाया लंबार अजाइगस वेन इट इज कनेक्टेड टू इंफीरियर वेना केवा. Ascending lumbar vein, just understand here, ascending lumbar vein, कृष्णा उभरा, मराठी में कृष्णा बोलते हैं. तुझं स्पेलिंग मराठीमध्ये काय? कृष्ण असं. इंग्लिशमध्ये KRI का KRU? KRU ना, कृष्ण. गुजराती लोगों की तरह हम कृष्णा कृष्णा वगैरह नहीं बोलते, कृष्ण. कृष्णा सांग रे बाळा, 3 ट्रिब्युटरीज काय आहेत? हाँ, 3 ट्रिब्युटरीज फॉर्मिंग अजाइगस वेन. बस आपका नाम? गौतम. बोलिए. सबकॉस्टल वेन, कृष्णा उभा राहा. माझ्या पाठीमागून जोरात ओरडायचं, मला ऐकू आलं पाहिजे. उभा राहा. 3 tributaries forming the azygous vein. Subcostal vein, ascending lumbar vein and lumbar azygous vein. Ascending lumbar, it's taking जैसे कि ये posterior intercostals कैसे रहते हैं ना, वैसे there are ascending lumbar veins at each vertebral level. So they, हाँ शबास्ती दे रहे थे उसको. बस रे काय, एकदा सांग ना.
काय 3 सबकॉस्टल वेन, ascending lumbar vein, lumbar azygos which connects it with, तो ऊपर सुपीरियर वेना क्या हुआ, नीचे इंफीरियर वेना क्या, जबरदस्त, मजे मजे। मजे क्यों है ये बताता हूँ। यहाँ पे अगर ब्लॉक हो गया, One, two, three, start. now suppose there is a block in the superior vena cava, there are two options, option 1, option 2। चलो इसको बोलते हैं, ऑप्शन 1 इज अबव द अजाइगस, ऑप्शन 2 इज बिलो द अजाइगस। आपको अगर ऑप्शन दिया भगवान ने कि भाई तेरे को सुपीरियर वेना केवा में तेरा ब्लॉक करने वाला है, तेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो अबव द अजाइगस या बिलो द अजाइगस। कितने लोग ऑप्शन 1 प्रीफर करेंगे? हाथ ऊपर करो। अबव द अजाइगस में नोटा चलेगा नहीं, मैं एब्सेंट मार्क तो कर दूंगा, जो वोट नहीं करेंगे उनको। अबव द अजाइगस इतने ही, 1 2 3 4 5 6 7 सराटे एवढ्याच लोकांना प्रेझेंट मार्क करायचं। बिलो द अजाइगस कितना लोग प्रेफर करेंगे? सर आता वोट नहीं की, तुम मैं देख रहा तेरे को, तो वोटिंग नहीं, ठीक है चलो। ऑप्शन 1 इज अ बेटर ऑप्शन। व्हाई? आपने हिंदी में सुना है ना, टाइगर अभी जिंदा है। तो जब थम्बा एक सेकंड, तो जब ये अगर है, अगर ये है अजाइगस वेन, उसके नीचे ओपन हो रहे, ब्लॉक ऊपर है, दैट मीन्स टाइगर अभी जिंदा है। स्टिल द सुपीरियर वेना केवा कैन बी यूज्ड because blood from here, from which is draining the upper part of the body, the brachiocephalic veins, can be brought down through subclavian, through the anterior intercostal to the posterior intercostal to the azygos and superior. You're getting it? But this happens, so खेल खत्म। Now the blood from the upper part of the body has to come to the heart only via inferior vena cava. So when this happens, the veins get dilated over the chest, only on the chest, because what is happening here हो गया था, now blood is going to come to the heart via superior vena cava only, but how brachiocephalic veins का जो blood है, it is going to the subclavian veins, anterior intercostal vein, posterior intercostal vein, azygos and superior vena. But when this block happens below the opening of azygos, all the blood comes down here to inferior vena. There is the thoracoepigastric dilatation also, मतलब lateral thoracic vein जो था ना, वो भी connect रहता है यहाँ से. So that time the veins are dilated over thorax as well as on the abdomen, engorgement of the vein. Thank you. समझ लो। तो वीनस पैटर्न आपके समझ में आ गया। ये जो वेन है ना, वेन इन द कॉस्टल ग्रुप देयर इज वेन। स्कूल वैन में कितने लोग बैठे थे? स्कूल वैन कितने लोगों ने स्कूल वैन लगाया था? बाकी लोग क्या चल के जाते थे? हाँ, बस। साइकिल पे कितने लोग जाते थे स्कूल को? वेरी गुड। मम्मा पापा कितने लोगों को छोड़ने को आते थे? आप हाथ ऊपर करें, प्राउड ऑफ देयर फादर एंड मदर। थैंक यू गौतम, थैंक यू। VAN, वैन, दैट इज द अरेंजमेंट इन द कॉस्टल ग्रुप। ये अगर रिब है, ये अगर रिब है, तो उसके कॉस्टल ग्रुप में देयर इज वेन, आर्टरी, नर्व। वेन, आर्टरी, नर्व।
Now remains the muscles. External intercostal will run like this. उसके डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स इन द एंटीरियरली विल बी लाइक दिस. इंटरनल के ऑपोजिट रहते हैं, मतलब एक्सटर्नल के फाइबर्स विल बी रनिंग लाइक दिस, इंटरनल के फाइबर्स विल रन लाइक दिस. ये फॉर्म ऑफ मैश. ओके. When you will study the rib, you will see that external intercostal arises from the sharp edge of the inferior border and gets inserted on the outer lip of the lower rib. Outer lip. Outer lip. जैसे इलियाक क्रेस्ट में कैसा था ना, इनर लिप आउटर लिप, वैसा अपर बॉर्डर ऑफ ईच रिब. सपोज ये रिब है, सो अपर बॉर्डर of each rib has inner and outer borders. The lower border is sharp. So from that sharp border, external intercostal takes origin. From the costal groove, मतलब अंदर से, takes origin the internal intercostal, and it gets inserted on the inner lip of the superior surface. मतलब ये अगर superior surface है rib का, उसके आउटर लिप पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इनर लिप पे इंटरनल इंटरकॉस्टल. दैट इज हाउ द इंसर्शन ऑफ मसल टेक्स प्लेस. ओके. सो थर्ड मसल inside is called as transversus thoracis. Transversus thoracis, which has three parts. Intercostalis intimae. जो ये दोनों के साथ, ये दो मसल्स के साथ रन होता है, सो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल, इंटरकॉस्टलिस इंटिमाई. एक आगे के पार्ट में रहता है केवल, उसका नाम है स्टर्नोकॉस्टैलिस. एक पीछे के पार्ट में होता है, उसका नाम है सबकॉस्टैलिस. Okay. Now this is the rib, this is the head, this is the neck. This is costal cartilage, this is tubercle, this is angle, and this is sternum. तो ये येलो से I am going to draw external intercostal muscle, which starts from the tubercle, goes to the costochondral junction. उसके बाद it becomes external intercostal membrane और anterior intercostal membrane. Suddenly वो membrane बन जाता है. Internal intercostal runs from the sternum till the angle, and then it becomes membrane posteriorly. I say. Then it becomes membrane posteriorly. So this is external intercostal, this is internal intercostal. And then intercostalis intimae, the transversus thoracis has three parts. पीछे के बाजू there is subcostalis, in between there is intercostalis intimae, and आगे के बाजू there is sternocostalis. The same muscle has three components. One is behind the sternum called as sternocostalis. One is in between called as intercostalis intimae, and posteriorly is subcostalis. एक और लेक्चर होगा टिपिकल इंटरकॉस्टल स्पेस पे. डोंट वरी, अगर आपका आज हैवी हुआ है तो उधर एक नर्व भी रहेगी. द नर्व
will run like this, give a collateral, sir. Give a ubarawa. This is it gives anterior branch, posterior branch, lateral branch. So nerve के भी branches होते हैं. But main thing हो, sir, carrying मत करा तुम्ही. माझं झालंय. So main thing you have to remember is anterior intercostal arteries कहाँ से origin लेते हैं, posterior कहाँ पे drain करते हैं, right side पे अलग है, left side पे अलग है. Anterior के भी arteries के भी veins के दोनों side पे अलग है. Arteries there is anterior there is difference, posteriorly. Okay. So जितना याद रहता है उतना ठीक है. A typical intercostal space is a typical long question. आपका उसमें you will have to write from where the anterior intercostal arteries, posterior intercostal arteries arise. You can take a 2-minute break in case you want to use the washroom. हाँ? Nerve के ये branches है, posterior branch, lateral branch, anterior branch. Nerve के भी issues ऐसे है ना कि most of these nerves 7 onwards तो abdomen में ही you will see. Nerve number 1 was involved in brachial plexus. T1 याद है ना, brachial plexus याद है ना? C क्या था? C1, C2, C4, हाँ? C5, C6, C7, C8 and T1. बेचारा C7. Again, sir. Thank you.